Okay, so I have clubbed GOC, which would cover the important concepts of organic chemistry, the RHI concept along with the isomerism and the hydrocarbons reactions as well. Okay, starting with the first question. In the following structures given, 1 and 2 are thioenantiomers, meso compounds, erythroenantiomers. 1 is optically active and 2 is meso compound. Now, first of all, I'll introduce the concept of erythro versus trio. Erythro is basically a structure in which there are two chiral carbons. Let's suppose we have a COH and a methyl over here, and there is HOH, HOH. And on the other hand, I have COH with a methyl, and one valency I fix it, and दूसरा valency I interchange. So, a structure with two chiral carbons in which the similar groups or atoms are on the same side, they are referred as erythrostereomers. And if the similar atoms or groups are on the opposite side, then they are trio. So erythro is analogous to cis and trio is analogous to trans. याद रखने के लिए T for trio, T for trans. That's how you can just remember it. मतलब जब groups opposite sides पे होते हैं तो उनको trio stereoisomers बोलते हैं. बस इतना ही है. ठीक है? Now let's solve the question. So erythro trio तो समझ में आ गया. In the question, they are asking about the relation between the two, whether they are enantiomers, meso, optically active or not. ठीक है? अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, what should be your approach? Fisher's RS configuration. Superb. So एक ही स्टेटमेंट मैंने बार बार बोला हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग मत लगाओ, RS लगाओ. And RS लगाने के लिए you need to convert the given structure into the Fisher projection. The Fisher projection के लिए what was the trick? angle to the right, then solid wedge to the right. Superb. So if you just take this in the vertical direction, then angle is to be taken between the bonds which are lying in the same plane. मतलब जो normal lines है, वहां पर bonds लेना है. So अगर आप इसको vertical में देखोगे तो this angle is going to the Right. right, and the second one is going to the left. Okay. Similarly, अगर यहाँ पर देखें तो this particular angle is going to the Left. अब इसको यहां से अगर वर्टिकल अगर आप करोगे, ठीक है, जैसे यहां से आप इसको रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज में, दिस एंगल विल गो टू द Left. Left. दिस एंगल शुड गो टू द राइट. समझा क्या बोला? तो उसको क्लॉकवाइज में क्यों नहीं कर सकते? क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं. अब मैंने क्यों ऐसे किया? बिकॉज इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट काइरल कार्बन, इट इज बॉन्डेड टू अ क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट एंड दूसरा वाला जो है वो OH के साथ अटैच्ड है. तो ये वाला जो कार्बन है ये मेरा पहला काइरल कार्बन होना चाहिए और ये सेकंड होना चाहिए. तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा in the anti-clockwise direction, then I'll get this chiral carbon as first and the other as the second, which I want in the sequence. Otherwise जो भी मेरा आंसर आ रहा है मुझे रिवर्स सीक्वेंस देखना पड़ेगा. तो जस्ट वो एक ऑब्जर्वेशन करना है आपको. समझा क्या बोला? Yes. ठीक है. So now let's convert the first structure into the Fisher projection. So when I
take this in the vertical direction. This particular angle is going to the right. Solid wedge will go on the right. So उसके सामने आ जाएगा dashed wedge and सबसे top पे आ जाएगा methyl. And second chiral carbon का angle is going to the left. तो उसका solid wedge will go to the left and dashed wedge will go to the right and the methyl will come down. Is this first structure clear in the fissure? Bolo. Yes, sir. So when you're saying right, you're saying like you're considering the two central carbons to be like the origin and saying left or right with respect to that, right? Like which side they lie on. The angle. You have to just check this angle which is going. So जब मैंने बोला vertical direction ना, I'll just draw this vertical direction. So this is how you will visualize the structure in the vertical direction. Yes, sir. And this particular chiral carbon is having the chloro and the H attached like this. Yes, sir. And this second chiral carbon is having the H and the OH like this. That is what you should visualize. Correct? Now you have to just check the angle, the direction. This angle is going on the Right. Right. so the solid wedge is on the right. And this angle is going to the Left. hence the solid wedge is going to the left. Now these are equivalent structures. Yes. Okay. Same way mein, let's draw the second structure. So again in the second structure what I was saying is you take this in the vertical direction. So now what you will get is this kind of visualization. Just follow that. है ना यहाँ पे मेरा डैश पे Cl है डार्क पे H है और इधर मेरा H डैश पे है एंड डार्क पे OH है. Is this clear first of all? Yes. Okay. So now the angle for the first chiral carbon is going to the left and for the second it's going to the right. So once you are able to visualize the structure like this, the Fisher projection is quite simple. Okay. So now top or bottom पे मेरा methyl तो fix ही है. The angle on the left, solid wedge on the left, H and Cl. Angle on the right, solid wedge on the right. Am I clear on this? Yes, sir. Yes, sir. So this is my structure number 2 and these are equal structures. Now compare the first and second. What do you observe? Right, sir. Yes. First of all, the hydrogens are on the same side. So both are erythro. And what's the relation between them? Means Enantiomers. Meso compound ये हो ही नहीं सकता है because there is no symmetry in this. ये क्लोरो और दूसरा भी क्लोरो होता तो वो मीजो होता तो आंसर डायरेक्टली है एरिथ्रो मीजो कंपाउंड हो जाता वो. But these are two chiral carbon. So it's analogous to two different coins being tossed. Do you remember that? Yes, sir. ठीक है तो ये सबसे पहले सिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें मीजो का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं मतलब मीजो विल बी रूल्ड आउट फ्रॉम द ऑप्शंस डायरेक्टली. अब ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी हो सकता है. अब उन दोनों में इनेंशियोमर्स तो है ही बिकॉज दे आर सिंपली द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ठीक है एंड हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड सो द करेक्ट आंसर इज erythro. इरिथ्रो इनेंशियोमर्स. अच्छा ये नहीं भी समझा तो मैंने एक चीज बोला है दिमाग मत लगाओ RS लगाओ. ठीक है सो RS को भी रिवाइज करा देता हूं. So with respect to this chiral carbon, the RS configuration is based on atomic number.
So the chloro will get the highest priority. नीचे वाला carbon will get second. ऊपर वाला carbon with triple H का set will get the third priority. Sorry. Okay. And the hydrogen will get the least priority. अब ignore the fourth. Connect 1, 2, 3. So 1 से 2 से 3 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज होगा R, because there was a golden rule which stated that if the fourth priority is on the horizontal line, whatever answer you get, just reverse it. ठीक है, अब दूसरा मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ if you have understood the rules. So OH will get the first priority, ऊपर वाला कार्बन सेकेंड, नीचे वाला मिथाइल थर्ड. अब घूम रहा है क्लॉकवाइज लेकिन होगा ठीक है. ऑन द अदर हैंड सेकेंड स्ट्रक्चर में क्लोरो नीचे वाला कार्बन सेकेंड एंड मिथाइल एज द थर्ड. दिस इज इन द क्लॉकवाइज, घूम रहा है क्लॉकवाइज होगा एस. एंड OH फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर वाला कार्बन सेकेंड, नीचे वाला मिथाइल थर्ड. सो 1, 2, 3 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज होगा R. So now for a compound with no symmetry, RS with SR एक दूसरे के enantiomers है. और इरिथ्रो और थ्रियो का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको. That's why the answer was option C. 1 and 2 are erythro enantiomers. Is this concept very, very clear? Yes, sir. ठीक है, this is a very important part of stereoisomerism, and there could be number of questions which can be related with this question. तो एक तो रिलेशन का क्वेश्चन आया जो मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं. दूसरा, मान लो इस कंपाउंड के रिलेटेड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे तो 2 raised to 4 the is the number of Yeah. hydrocarbons. now this will be related with 2 raised to the number of chiral centers, which is 2 square, which is equal to 4. Had it been symmetrical, then the answer would have been 3. अगर दोनों क्लोरो या दोनों OH होता तो 3 आ जाता, and there would be a concept of mesomers in that case. How many enantiomeric pairs will be there? 2. RS के साथ SR and दूसरा RRSS. RRSS. ठीक है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म्स कितने बनेंगे? 2. वो भी 2 बनेंगे. RS with SR will form one racemic mixture which will be optically inactive due to External compensation. external compensation. And RR and SS will form another racemic mixture form. ठीक है, so that's the variety of questions which you can get. Clear है ये? Next, consider the following set of compounds, and again you have to find whether they are enantiomers, diastereomers, constitutional isomers, or same या identical. Now what is constitutional word related with? Conformers, right? Na. Constitutional was alternate word of structural isomers. Structural itself are called constitutional. Remember. Conformations के लिए we had conformers, rotamers और conformational isomers. ठीक है, constitutional is alternate word of structural isomers. Okay. Now, first structure, there is a double bond over here, which is not perfectly observable. I've just drawn the double bond. Okay. Okay. Now, check the first two structures. What is the relation? So, approach क्या रहेगा? What is the first thing? Target name. They are same. Because सबसे पहले, is this carbon considered to be chiral? No, sir. Not. No. Because this carbon is bonded to methyl and H, but ये cyclic ring में there is a symmetry. सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करना है? इसका एडजेसेंट ऑक्सीजन है, इसका एडजेसेंट भी ऑक्सीजन है.
उसके बाजू में डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाजू में डबल बॉन्ड कार्बन. So you keep on rotating in the ring, and if everything is same, then you say that it doesn't have any different substituents. This particular carbon is achiral, and now if you check the two structures, they are exactly Same. same. Okay. Now second के लिए, is there a chiral carbon? Yes. Yes, Prof. Yes. And relation find करने के लिए first Converted to Fisher. Fisher projection. convert to Fisher, and then RF. RS, दिमाग मत लगाओ, RS लगाओ. अब again you have to see the angle between the two bonds in the same plane. इसको vertical में घुमा दो तो angle is going to the Left. left, so the solid wedge will go on to the Left. left, which is D will come to the left. उसके सामने आ जाएगा OH, ऊपर चला जाएगा मिथाइल, और नीचे की तरफ CH डबल बॉन्ड CH मिथाइल आ जाएगा. ठीक है. अब प्रायोरिटी. So D is nothing but deuterium, the isotope of hydrogen. तो प्रायोरिटी ऑफ कोर्स ऑक्सीजन को पहला जाएगा, फिर सेट बनेगा तो डबल CH वर्सेस ट्रिपल H. ट्रिपल H विल गेट अ लो प्रायोरिटी, और ये सबसे लीस्ट में आ जाएगा. अब 1 2 3 घूम रहा है क्लॉकवाइज, होगा Yes. S. ठीक है. वर्सेस उसके सामने वाला स्ट्रक्चर. अब इसमें भी इफ आई टर्न टू दिस, इसको भी ऊपर घुमा दो, एंगल इज गोइंग टू द Left. Left. अगेन सॉलिड वेज विल गो टू द Yes. लेफ्ट. मतलब फिशर में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH, उसके सामने आ जाएगा मिथाइल, ऊपर आ जाएगा D, नीचे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एंड अ मिथाइल. Again, this is 1 2 3, and now fourth priority is on the vertical line. So Like no Change change. it. no change. घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, होगा भी S. क्या बोलोगे? Same. Yeah, same. How many stereo centers did you observe in this? G. Stereo center could be GI or OI, na? GC or OC. Two, na? Yes, there are two. ये तो chiral center है. And did you observe this? With a double bond. This is your Yes, sir. geometrical center. तो ऑप्टिकल सेंटर के रिलेशन में तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. बट लुक एट द डबल बॉन्ड केयरफुली. व्हाट डू यू सी? GI is there. GI is there, na? Diast. Yes, and a geometrical isomers is simultaneously a pair of diastereomers because they are non-mirror images of each other. ये समझा क्या? ये आपका सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर है और ये ट्रांस है. दिख रहा है क्या? If you remember butane in the bond line formula, we had drawn like this. This is the boat shape where the methyls are on the same side, and this is like a chair shape where the methyls are on the opposite side. This is cis and the other is trans. And cis and trans GI तो होते हैं. GI के साथ साथ they are also simultaneously a pair of diastereomers which are not mirror images of each other. ये समझा? Yes, sir. ठीक है. सो दिस विल बी डाइस्टीरियोमर्स. ये सेम है, ये डाइस्टीरियोमर है. अब थर्ड वाला. थर्ड के लिए अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द फिशर. नाउ थर्ड वाले स्ट्रक्चर में दिस पर्टिकुलर थिंग इज गिवन इन द डैश वेज. ये डैश है और ये भी डैश वेज है. नाउ इस तरह के wedge dash projection को directly you have to convert it into the fissure. In fact, it is actually fissure projection only which is given in the darkened dash wedge. तो इसमें हम एंगल फाइंड करके सॉलिड वेज ऑन द राइट वाला रिलेशन नहीं यूज करेंगे.
मतलब this type of representation is your Fisher only, where the above group is aldehyde, a primary alcohol at the bottom, a H with a methyl. Now, how do you assign the priority for aldehyde, methyl, and a primary alcohol? Aldehyde, then the alcohol, and then Perfect. Based on the set, ना? So aldehyde का हो जाएगा double OH, methyl का हो जाएगा triple H, और इसका हो जाएगा OHH. Set का concept clear? So this will be first, primary alcohol second, methyl third and fourth. अब 1 2 3 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, होगा R. अब दूसरा जो है, here we can draw the angle and we can apply the rule. So angle is on the left, solid wedge will also be on the Sir, left. can we move it into and clockwise direction? कर सकते हैं, कैसे भी करो, आपका Sir, तो फिर डार्क सेम डैश जो है ऊपर ऑपोजिट आ जाएगा। क्या सर कैसे फिर भी करो, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सेम हो मिरर जाएगा। इमेज आएगा। हाँ यो बोलो। सर नहीं, उससे सेम साइड हो जाएगा ना फिर वो। हाँ लेकिन सिंगल कार्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंगल कार्बन में चारों ग्रुप को कैसे भी रखो। वो जो मैंने बोला था ना, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द टू कायरल सेंटर्स, बिकॉज टू कायरल में वो सीक्वेंस ऑफ द कायरल सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन कायरल सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी करो, जस्ट असाइन द फोर ग्रुप्स प्रॉपरली, दैट्स इट। समझा मैंने क्या बोला? यस। एक कायरल सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे भी घुमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर प्राइमरी अल्कोहल आएगा, नीचे अल्डिहाइड आएगा, एंगल ऑन द लेफ्ट सॉलिड वेज यानी मिथाइल लेफ्ट में और एच राइट में। अगेन ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब 1 से 2 से 3, 1 2 3 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, होगा आर। सब दोनों आर आया और इसमें एक ही काइरल सेंटर है यानी ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब दे आर ऑफ कोर्स आइडेंटिकल और सेम, तो ये हो जाएगा सेम। So for the second structure, isn't the angle on the right? द सेकेंड स्ट्रक्चर, Like of you the are third one. seeing Like the the angle third one. between थर्ड का सेकंड ना, Yeah. एंगल लेफ्ट में जा रहा है ना, राइट में किधर जा रहा है? So if you draw it vertically, then it's going like downwards towards the right, no? ना 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 ना, look, this structure is like this, सिंपल तो स्ट्रक्चर है। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड को कंडेंस करके लिख CHO, ये तेरा मिथाइल है और ये H है। अब देख एंगल किधर जा रहा है, Cha left, yeah. लेफ्ट ही जा रहा है ना, Yes. ठीक है। ये CHO ऐसा लिखा है इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कंडेंस करके बताया। करेक्ट है, Yes. ठीक है। नाउ देयर इज आंसर की करेक्शन, it should be same diastereomer and same. So we'll go for option D, but first one would be same. So SDS का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर काफी अच्छा एग्जाम्पल था, where you don't only visualize the chiral center but also observe the GC. इनफैक्ट इसके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर सेकेंड नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने हैं? 2. हाँ, सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स डिड यू ऑब्जर्व? Two stereo centers. अच्छा हाँ, स्टीरियो सेंटर 2 है। स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 2 only, no? 2 only. ऐसा 2 होगा रे? So But four, no? they were same, no? Like the Yeah. No, wait, 3. अरे बाबा, स्टीरियो सेंटर 2 है, मतलब यू विल हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस ट्रांस फॉर द GC एंड RS फॉर द ऑप्टिकल सेंटर OC।
तो अगर दो स्टीरियो सेंटर्स है, वेदर दैट इज GC OC और both GC both OC, the number of stereoisomers are going to be 4, na? So, but didn't we get the optical thing same in the second one? Yeah. अरे ऐसे नहीं, in general for this compound with two stereo center, how many total isomers it can have, ऐसा पूछ रहा हूँ. Like only considering the one structure, ना? नहीं नहीं, इन जनरल इस क्वेश्चन में मतलब एक स्ट्रक्चर दिया आपको और पूछा कितने स्टीरियोइसोमर्स हो सकते हैं, वैसा पूछ रहा हूँ. अच्छा मतलब लाइक S का सिस एंड ट्रांस और R का सिस एंड ट्रांस. हाँ मतलब आपके पास हाँ. सिस के साथ आर होगा, सिस के साथ एस होगा, ट्रांस के साथ आर होगा और ट्रांस के साथ एस होगा. अभी मेरे पास दो स्ट्रक्चर क्या है, सिस विथ एस एंड ट्रांस विथ एस. ये दोनों मेरे पास है ना, सिस विथ एस एंड ट्रांस विथ एस, ये वाले. समझा? मैं पूछ रहा हूं आपको और कितने स्ट्रक्चर्स या टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने आ सकते हैं. आर यू क्लियर विद दैट और नॉट? Yes, sir. सो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स आई कैन हैव इज 4, ऐसा मैंने पूछा. Yes, sir. ठीक है, मेंस में ये डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दे विल गिव यू अ स्ट्रक्चर लाइक दिस और दिस, दे विल आस्क यू नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड इज. So with two stereo center, the answer will be 4. And the combination will be cis R, cis S, trans R, trans S. समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये. Okay, let me first have the bonds properly shown. So these are all the benzene ka bonds, and even the product is your benzene ring with N-propyl and isopropyl. Okay, question है, the compound X, which is benzene, is to be converted via three reagents A, B, and C into the product Y, which have two propyls, N-propyl and isopropyl, meta to each other. So three reactions are given: Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, and reduction. What should be the sequence? Will be C now. Acylation, reduction and Yes. alkylation. Acylation, फिर reduction, फिर alkylation. The acylation, alkylation, and then reduction, no? Yes. Why? Because meta पे it's there, so तो अयूब, इस टाइप के क्वेश्चन में बराबर से सोच समझ के सीक्वेंस बताना है. तो जब हम सेकेंड को पहले करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, व्हाट आई गेट इज बेंजीन के ऊपर Acyl chloride. सी, वो असाइल क्लोराइड नहीं, असाइल ग्रुप, COCH. सी COCH. डबल बॉन्ड ओ आर. अब CH3 नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास प्रोपियोनाइल क्लोराइड का C2H5 आ जाएगा, ये ET, तभी तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर मिलेगा ना मुझे. yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बाद जब आप रिडक्शन करते हो, यू विल ऑलवेज गेट द स्ट्रेट चेन अल्काइल अटैच्ड टू द बेंजीन via the Clemenson's or Wolff-Kishner reduction. सॉरी. समझा? Yes, sir. एंड ये मैंने बताया भी था कि अगर आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन लाना है तो आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से ही ला सकते हो, ना कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से. बिकॉज असाइलेशन क्या करेगा, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट द कार्बोनाइल इनटू अ CH2 Yes. ग्रुप ना, मिथाइलिन. ठीक है. नाउ सिंस दे आर मेटा टू ईच अदर, I can't do the reduction first and then the alkylation because that will make it OP directing. So first step acylation करके I have made the ring meta directing. अब जब alkylation करेंगे with the alkyl halide, then I'll get a substituent at the meta position. अच्छा, कौन सा substituent मिलेगा meta position पे? If I do the alkylation with N-propyl chloride, Isopropyl. benzene plus Isopropyl. N-propyl chloride will never give N-propyl benzene.
via carbocation rearrangement it will give you cumene, isopropyl benzene. आता है समझ में? Yes, so तो सेकेंड के बाद हमने किया फर्स्ट, और अब जब रिडक्शन करेंगे तो दिस विल चेंज इनटू द CH2 group via the Clemenson's और Wolff-Kishner reduction. तो ये आ गया CH2, मतलब reduction will be the last step. Am I clear with that? yes, so So So, answer will be option C. हाँ बोल. so can you explain why you started with acylation? The first observation is I required a product which is meta with respect to each other. Yes, sir. Okay, so I need to introduce the first substituent which should be NSC-ICA type, Yeah. not the Papert type. Hmm. तो अगर मैंने बेंजीन से शुरू किया and if I do the alkylation first, then what I'm doing is I'm making my With ring OP directing then. OP directing. Hmm. तो आप कोई भी नेक्स्ट रिएक्शन करोगे आपको पैरा पे मिल जाएगा, which is Yeah. not the desired product. Yes. Hence I need to start with the acylation, make it meta directing, do the alkylation, and then reduce it to get the CH2 group. So, but This is the won't sequence. R make that full group EDG only, like the R that's present on it? Which are ये वाला? Yeah. Why are we bothering about this? Your main functional group is the keto group, which is from NSCI का. यहाँ R कुछ भी हो, R doesn't make the ring activating. The one which is directly bonded to the benzene will have the effect of EDG or EWG plus or minus R. Acha, okay. हाँ, that's why I got confused. This is a keto ना, ये फिनोन कंपाउंड है, Yeah. ठीक है? तो आपको पहला ग्रुप NSCI का लाना है, फिर अल्काइलेशन करना है और उसके बाद रिडक्शन करके यू हैव टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. सिंपल है ये. ओके, नो अदर कॉम्बिनेशन विल वर्क. Okay. Now next one has a new concept which I'll discuss here. Consider following reaction, one or two types of products are formed. So there is a benzene with sodium liquid ammonia in all the three cases. Third में भी sodium liquid ammonia is the reagent. Now where we have observed sodium liquid ammonia reagent? alkyls में Hmm? BTLC में तो BTLC में. और BTLC में कहाँ पर? बर्च या लिंडलार? लिंडला सोडियम लिक्विड अमोनिया लिंडलार में था? Birch. बर्च में था. Birch gives you trans and Lindlar gives you cis. That was BTLC का concept. Now, Birch reduction can be expanded to the aromatic benzene compounds. Listen to this carefully. If you have a benzene and if we use sodium and liquid ammonia, then one of the double bond gets reduced and you get a hexadiene, cyclohexadiene, in which the double bonds are now not in the alternate positions. तो सोडियम लिक्विड अमोनिया का एक मैकेनिज्म है जो आपको सिलेबस में नहीं है. What you got to remember is if I do the Birch reduction for an aromatic benzene, it will reduce one of the double bonds, but changing the sequence of the double bonds, which is no longer in conjugation. Conjugation को break कर देता है वो. ठीक है. अब इसमें सेकेंड केस, इफ देर इज अ EDG यानी कोई भी पापद ग्रुप attached to the benzene and if we use sodium and liquid ammonia, then again I'll get the cyclohexadiene which is in the opposite directions, matlab no longer in conjugation, but my EDG will be on the double bonded carbon यानी sp2 वाले कार्बन पे होना चाहिए. My EDG has to be on the double bond carbon. मैं ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकता था, सेम बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खाली EDG को sp2 कार्बन पे रख देना है. लेकिन केस 3, if I have a EWG attached to the benzene, then if you have understood the second case, in this case I'll get the double bonds similar. The
मेन प्रोडक्ट्स इज सिमिलर, खाली ईडीजी होगा तो sp2 पे रहेगा, ईडब्ल्यूजी होगा तो दैट विल स्टे अवे फ्रॉम द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ईडब्ल्यूजी विड्रॉइंग, विड्रॉइंग बुरा ग्रुप है तो वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं आता है, वो उससे दूर आ जाता है, बस। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिमेम्बर। Am I clear on this 3 cases? अरे बोलो। Yes. Yes. Yes, sir. क्वेश्चन क्या है? कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, one or two types of products are formed, and in which of the above cases product can be distinguished by Tollens or haloform test? I hope you know the Tollens test was given by Aldehydes. Dehydrated. aldehydes, Alpha hydroxyketones, Alpha 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 benzaldehyde, formic hydroxyketones, acid. formic acid. formic acid, and Benzaldehyde. Benzaldehyde. हाँ, benzaldehyde is a part of aldehyde. Sugars में Like, except sucrose. Like, except sucrose all are reducing sugars, मतलब सबके सब टोलेंस देंगे। And on the other hand, haloform test was given by Hemiacetyl. like Two, two on, two all. two all and two Aryan all. hemiacetal भी correct है, हाँ? Even हाँ हाँ hemiacetal is a correct compound for tolerance test. Perfect. हाँ, haloform Methyl You should have a acyl, like C double bond O or मैंने like all. haloform test is given by Acetophenol. हाँ, ethanol, ethanol, alkane 2-on and alkane 2-all. Along with that, acetophenone and उसका corresponding secondary alcohol. 6 things you are supposed to remember. Yeah. Okay. So now let's solve this question. So first में I have benzene with sodium liquid ammonia. अब strike होना चाहिए. This is the Birch reduction, and I'll get a product which is a cyclohexadiene having no conjugation. अब O3ZnH2O is Reductive. reducting. reductive ozonolysis, so double bond tod, oxygen jod. You'll get a symmetrical structure, and it will give you CHO with CH2 and CHO. ठीक है, and इसके 2 moles मिलेंगे, right? Yes. Now, since the products are same, will there be any need of differentiation? Product same ही है ना? हेलो, So, ठीक है, तो कोई डिफरेंशिएशन की yeah. जरूरत नहीं है। अब सेकेंड वाला यहाँ Yes, से कर sir. लेते हैं। Now, toluene with sodium and liquid ammonia will give you cyclohexadiene, no conjugation, and a methyl onto the sp2 double bonded carbon. अब इस केस में डबल बॉन्ड तोड़, ऑक्सीजन जोड़। तो यहाँ पर तोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे तोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। Are we getting different products? Yes, sir. Yes. First, so upper part में CHO, CH2, C double bond O, CH3, I've got a methyl ketone, and lower part में I've got a CHO, CH2, CHO. Can Haloform they से be get distinguished? haloform से Yes. This will be, of course, differentiated by the haloform reaction because we have got our 2-on wala ketone, which is methyl ketone. ठीक है, तो second तो valid option है. Even tolerance, no, because there's an aldehyde group. But this is also an aldehyde, this is also an aldehyde. So within the structure, one part will pass and one part will fail. और ये पूरा पास करेगा. So वैसे भी आपको और बोला है ना, टोलेंस या हेलोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म से तो डिफरेंशिएट हो ही रहा है ना, Yes. so valid option है. अब थर्ड में आई हैव ओजाइलीन. अब जाइलीन के केस में जब बर्च रिडक्शन होगा, I'll get the 2 double bonds and both the methyls will be on. the same double bonded. Same double bond आजू बाजू. और अब इसका ओजोनोलाइसिस करे
तो डबल बॉन्ड Same को product. यस, इट्स अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सेम प्रोडक्ट, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मतलब इवन थर्ड इज रूल्ड आउट एंड हेंस द आंसर विल बी ओनली सेकंड, ऑप्शन ए। क्लियर है ये? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, next one. So again, in the synthesis of the compounds B and C from starting from benzene, the sequence which we need to follow to get to the B compound and to get to the C compound. And there are various reagents which are given from 1 to 7. So A to B के conversion में और A to C के conversion में क्या steps होंगे, that we have to find. Now इतने सारे reagents है तो select करने से अच्छा आप option by option देख लो. If I start with the option A for A to B, first मतलब bromination, I'll get a Br. Then second, nitration. Will this work? No, sir. All three are Or meta, so you have to हाँ, go the first accordingly. observation, आपको जो तीनों substituents attach करने हैं, they are meta with respect to each other. So the moment you do bromination and do any Shan reaction, you'll get the product at the para position, so it will fail to get the desired product. यानी option A तो ruled out है, आता है समझ में? Yes. अब B में if I do the alkylation first and then sixth, It won't work now over here. Again. अब आगे का सीक्वेंस Yeah. देख, थर्ड मैंने अल्काइलेशन किया इथाइल Oxidation to बेंजीन, acid. हाँ, sixth is the KMNO4 oxidation which will change into carboxylic acid, then 2 is your nitration which will give you nitro at the meta. Now both the groups are meta directing, so if I do the bromination, even the Br will be at the desired position. मतलब एटा पे आएगा, समझा ये? Yes, sir. करेक्ट है आंसर ये। सी मैं सीक्वेंस आपको बताता हूँ। फर्स्ट में हमने क्या किया, थर्ड इज योर इथाइलेशन, I'll get a ET on this. Then KMNO4 oxidation changes this into COH, makes it meta directing. Then do the nitration, you'll get a nitro on the meta. Now both the groups are meta directing. So if you do the bromination at the end, you'll get the bromine at the desired position. And this is correct sequence. So let's verify the A to C conversion. A to C में third पहले किया, मतलब वापस alkylation, फिर fourth is conc H2SO4. Sulfonation. And that will give you the SO3H at Ortho. orthopara. And then fifth wala reaction, acylation. Is this valid? So, but won't the SO3H like first go to para only? It will. तो फिर अगर ये ऑप्शन नहीं है तो चेक फॉर द डी, बिकॉज सी वाले में 1 के बाद फिफ्थ किया है विच इज अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन, तो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। Yeah. ई वाला भी चेक कर लेते। थर्ड वन इज योर अल्काइलेशन, देन सेकेंड नाइट्रेशन, ये तो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, मतलब सी और डी तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं ना। Yeah, so it'll have to be B only. हाँ, तो अब यहाँ पे फंडा क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन बी में थर्ड स्टेप विच इज योर इथाइलेशन इज डन फर्स्ट, देन यू परफॉर्म द conc H2SO4, that is sulfonation. तो सल्फोनेशन में क्या होगा, द SO3H will go to the para position, ठीक है। बट सल्फोनिक एसिड में एक और चीज बताया था कि मान लो अगर मैं सल्फोनेशन 2 बार कर भी लूं, It's a good good lead. living group. इट्स एन एक्सलेंट लिविंग ग्रुप। तो अगर इसके बाद आपने मान लो असाइलेशन किया, तो असाइलेशन विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एक्टिवेटिंग ग्रुप। Yes. तो इसको हटा के अगर पैरा पे
COCH3 आ जाए तो मुझे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा कि नहीं? समझा? Yes. So, You have to rule out the options and then only understand this concept. Without ruling out, ये आप नहीं कर सकते. समझा? But this yes. concept we have already studied. If you remember, हमने नाइट्रेशन सल्फोनेशन किया, उसके बाद Pickeric acid. नाइट्रेशन किया. हाँ, तो it was converted into picric acid. So it removes the SO3H, which is a very, very good living group. Okay? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा. तो रूल आउट करके तो आप आंसर कर ही सकते थे, कोई इश्यू नहीं है इसमें. ठीक है? नेक्स्ट. Yes. In the following reaction, the product formed is A and not B. So again, it is concept similar to The Birch reduction the wala. Birch reduction, having the EWG, RG. and if I have EWG, it will be attached to the Non-double bond. SP3. sp3 carbon. So is the statement 1 correct? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Product is A and not B. B is wrong. है ना? It is called Birch reduction and COH is electron withdrawing group. Yes, sir. Yes, sir. And is statement 2 the correct reason? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So both are true and is the correct explanation. Option A. Assertion reason type. Now more than one option correct. इसमें थोड़े wedges को बराबर कर देते हैं पहले. So whatever you are not able to see, they are actually the dash wedges. Okay. Question है, the diastereomeric pair among the following is R. First option, Yeah, no, like yes. it will be. because they are, Geometrical isomer. and a pair of GI is simultaneously a pair of diastereomers. So of course, this one is pH के सामने H and this is pH with H. So transenses, they are diastereomers. Second, now what is an easy way to solve this? ये डायस्टीरियोमर है कि नहीं है, उसके लिए एक ट्रिक दिया था, if you all remember. Yes, sir. Only You? if one is clashing, then it's a die. Chiral carbon clash. हाँ, अगर R S और R R है, एक क्लैश और एक डिफरेंट, they are always a pair of. Diastereomers. So if you check, this chiral center is fixed, मिथाइल वाला, थर्ड ब्यूटाइल भी फिक्स्ड है, एक ही chiral center डिफर कर रहा है. तो मान लेते हैं ये R है, ये R है और ये भी R है, तो ये ट्रिपल R वाला केस हो जाएगा. एंड सामने जो है एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, दैट विल बी SRR, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू बी एक दूसरे का Diastereomer. डायस्टीरियोमर. समझा ये ट्रिक? Yes, sir. Two chiral centers are fixed and only one is changing. C, Enantiomers. Enantiomers. because they are Sir. enantiomers. हाँ, सर इन C1 ट्रांस नहीं है ये, मतलब GI नहीं है. GI भी है, तो GI के लेकिन हिसाब से वी कैन से डायस्टीरियोमर. नहीं. अभी क्या होता है ना, जब भी आप आइसोमर को रिलेट करते हो ना, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल सोचना है. स्ट्रक्चरल के बाद द नेक्स्ट थिंग इज टू थिंक ऑफ ज्योमेट्रिकल, एंड ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल. अब क्योंकि यहाँ पर दोनों वेजेस या तो ऊपर अबव द प्लेन है या नीचे बिलो द प्लेन है, तो एक्चुअली यहाँ पर यू कैन से ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज ही है. एंड डायस्टीरियोमर होने के लिए दे मस्ट बी नॉन मिरर इमेजेस. अच्छा, ये डायस्टीरियोमर कब होता? जब आपके पास एक स्ट्रक्चर में दोनों डैश होता और दूसरे स्ट्रक्चर में
एक डैश और डार्क होता। तो ये आप सिस बोलते हैं और ये आप ट्रांस बोलते हैं ना आर्यन। यस तब जाके ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। बट इस केस में क्या दिख रहा है आपको, या तो दोनों डार्क पे है या दोनों डैश पे है। सो बेसिकली मिरर इमेज ही है ना इसके। यस ठीक है, तो यहाँ जीआई का फंडा नहीं लगेगा। दे आर डेफिनेटली द इनैंशियोमर्स। दिस एंड दिस आर इनैंशियोमर्स, so not the diastereomers. Now last में there is the chair conformation of the cyclohexane which is being given. Again एक simple observation करो, you will get your answer. So they're identical, no? Are they? So that सर इधर one weight on ये the वाला left OH something is Now this particular center and this particular center is identical. This and this are identical. But this and this are different. मतलब अगेन दो क्लैश हो रहे हैं, एक चेंज हो रहा है, तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। So, but they've not shown it in any different way. Like they've Yeah, just so how are they different? हाँ, they've अब just सुनो, drawn it in a different direction, but it's the सुन same. सुन। The cyclohexane can be represented in the form of a chair conformation. Yeah. Now, for a cyclohexane, the two valencies which we have are either the axial valencies or the equatorial valencies. Axial valencies are ones which are perpendicular like this. And the equatorial valency is inclined at an angle of 109.5 degree. मतलब दूसरी वैलेंसी जो है वो ऐसा है, ये एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं और ये इक्वेटोरियल वैलेंसी या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक्सियल नीचे आएगा, इक्वेटोरियल ये हो जाएगा। क्लियर है? Yes. So what you observe over here in the structure is this particular bond will be Uh, the first one will be axial. एक्सियल इज परपेंडिकुलर। जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये देख, ये पूरा इसके लाइन में वर्टिकल है। कैन यू सी दैट? ये कंटिन्यूअस लाइन में है ना, परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? No, no. परपेंडिकुलर को एक्सियल बोलते हैं और परपेंडिकुलर नहीं है उसको इक्वेटोरियल, सिंपल रखते हैं। समझ में आया? Yeah. So when one bond is axial and one is equatorial, it is as good as in the cyclic structure, one is above the plane, another is below the plane. That is what we visualize. See, actually, हम ये simple language में बोलते हैं कि for a cyclic ring, एक bond ऊपर है, दूसरा bond नीचे है. But are these valences perpendicular in reality? no, sir. No, because this carbon is my sp3 carbon. And sp3 carbon matlab the bond angles must be 109.5 degree. So this is a simple way to show कि यहाँ पे मान लो H है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, ये मेरा cis isomer है। बट रियलिटी में ये स्ट्रक्चर ऐसा होता ही नहीं है। इट विल बी इन द मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चेयर कॉन्फॉर्मेशन। अब उसी में ये जो दो वैलेंसीज होती है ना, वन विच इज परपेंडिकुलर इज द एक्सियल वैलेंसी another which is inclined is the equatorial valency. मतलब दिस इज एज गुड एज ऊपर वाला डार्क वेज नीचे वाला डैश वेज वैसा। A simple way to understand. So, but perpendicular also depends on the way you're seeing it, right? Like if you're Yeah. seeing it with respect to the other one, then this becomes equatorial and the other one becomes axial. Which one becomes equal? First one. Yeah, so like if you're seeing the first one with respect to the horizontal line. ये ना डायग्राम में ऐसा लग रहा है, अब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, अगर परपेंडिकुलर होता तो सीधा इसके लाइन में जाता वो। ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड ही है, बट दिस इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर। कैन यू सी दैट? दिस इज Yes. स्लाइटली इंक्लाइंड, वो एक्चुअली ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए। बट फिर भी अगर डिफरेंस देखो, ये तो क्लियर परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा है। होना चाहिए ज्यादा, बट ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो ये इक्वेटोरियल हो गया और ये एक्सियल हो गया। और बाकी दोनों वैलेंसी तो एग्जैक्ट सेम ही दिख रहा है ना, ये CH2OH और OH।
Correct? Yes or no? Yes, sir. Hello. Okay, so this was also a good question to understand the relation as diastereomers, enantiomers, meso, the concept of stereoisomerism again. Next, the reaction that results in the formation of aromatic species is R. How to solve this question? You have to use Huckel's rule. Huckel rule. Correct. So first में SbCl5 will take away Cl minus. and will generate a Carbo like cation. form a carbocation along with SbCl6 negative. So now this particular species, as per Huckel's rule, is Aromatic. Stable. stable because it is planar, having delocalized pi electrons, and the total delocalized electrons are 2, which follows the 4n plus 2. Hence this is aromatic. सेकेंड जो है इट इज AgBF4, करेक्शन है Ag plus BF4 minus. So क्या मिलेगा? पेंटाडाइनाइल cation. Anti-aromatic. Cyclopentadienyl carbocation, which is famously anti-aromatic. Anti-aromatic. With the byproduct AgBr, Ag will take away Br, and the BF4 negative, which will be attracted with this carbocation. So this is not aromatic. NaH का रूल क्या है? What is NaH? Select. Hydride base like Yes, it's a very, very strong base, hydride. And base has affinity for? H plus. So कौन सा H plus है which will get eliminated? CO के नीचे. The sp3 carbon. Yeah. है ना? And we know that a carbon which is bonded to the electron withdrawing, उसका H is More acidic. more acidic. So this will take away as H plus, and this carbon will generate a negative charge. COPH, PH, and PH. So minus will be attracted with the Na plus with the liberation of the hydrogen gas. That's how we complete the reaction. Now, is this aromatic? No. Of course not, because it will have 4 electrons, which is following 4n delocalized electrons, making it anti-aromatic. Last one. Yes. Na क्या करेगा? It will immediately lose the electrons to form, Na plus. and the other ring will become minus. So this is cyclopentadienyl anion, which will be attracted with the cation Na plus, and this is definitely aromatic as per Huckel's rule. So answer will be A and D. So, Hmm. so in advance for such a question, like total will be 4 marks. So if you mark like one correct, do you get 2 marks or 1 mark? Partial marking will be given. So based on the number of options which are correct, the partial marking will be decided. But अगर 3 option correct है out of the 4 and you tend to mark only 1, then you will get 1 mark. 3 में से Okay. 2 correct है तो 2 marks. 4 में से 2 ही correct है, and if you mark only 1, then you will get plus 2. Plus If 2. both are Okay. correct, then plus 4. Okay. So even the partial marking will vary depending on the number of options which are correct. So these types of questions come in advance. Yes, they do. So that's why I have asked you to go through the PYQs. Whatever questions I'm covering, they will have the concept which is applicable in PYQ. ठीक है, और कुछ PYQs मैंने लिए भी है, आपने देखे होंगे तो जहां जहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नहीं अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ये, हाँ, दिस वाज द PYQ, ये भी PYQ है. ठीक है, सो लेते हैं आगे. ओके, नेक्स्ट वन.
Select correct statement about the group G which is bonded to benzene nucleus. So it's a simple substituent which is bonded to ring. अब 4 options. If group G has atom more electronegative than carbon atom, then G exhibits electron withdrawing inductive effect. G has the atom which is more electronegative than carbon. Yes, sir. Yes. More electronegative than carbon like OCH3 या NO2, then it will definitely exhibit the negative inductive effect which is electron withdrawing inductive effect. Now, please remember, ये मैंने बोला भी है आपको, वापस एक चीज बता देता हूँ. When you have a methoxy onto the benzene which is anisole, what R and I effects does it have? Plus R minus I. So plus R with respect to the delocalization of the lone pair. This is any solid now. Sorry, anisole. हाँ, प्लस आर एंड माइनस आई. तो जब आप इंडक्टिव बोलते हो तो वो माइनस आई का इंडक्टिव है, लेकिन रेजोनेंस बोलते हैं तो प्लस आर का रेजोनेंस है. ठीक है. While discussing the acidic strength with respect to substituents in phenol and carboxylic acid, we have discussed it. Okay, so first option correct. Now, if group G is polarizable alkyl group, then it donates electrons and exhibit electron donating inductive effect. Alkyl group attached to the benzene. Yes, sir. It's true. अच्छा, पोलराइजेबल अल्काइल ग्रुप का मतलब, अगर मेरे पास टोलुइन है, does it actually show plus resonance or it shows some other effect? EDG also plus I. So plus R and plus I. अब पापत में मैंने टी को, टोलुइन को सबसे लास्ट में रखा था, और मिथाइल के पास कोई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर तो है ही नहीं. तो हाउ इज इट delocalizing in the benzene ring? Via resonance. The hyper Yes, it is not Hypercon- actually resonance, it is hyperconjugation with a condition of sp3 carbon sigma bonded to sp2. मतलब यहाँ पर जो delocalization हो रहा है, that is not via R. ये R तो सिंपल मैंने पापत के ऑर्डर के लिए इंक्लूड किया था, बट जब अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर है, वो एक्चुअली पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, प्लस HC, बिकॉज दैट इज sp3 सिग्मा बॉन्डेड टू sp2. फिर क्या होता है, यहाँ पर अल्फा कार्बन sp3 पे H होता है, वो H यहाँ पर पोलराइज होकर इधर डीलोकलाइज होता है, तो द सिग्मा चेंजेस टू, सॉरी, सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू, अरे द इलेक्ट्रॉन्स delocalizes ना, this is the delocalization of sigma electron, so the single bond changes to a double bond, and the H plus will be weakly attracted to this pi electron system. That is why the hyperconjugation was also called no bond resonance, Baker-Nathan effect. याद आया क्या concept? Yes, so And more the alpha H, more is the stability. So polarizable का मतलब ये है जो मैंने यहाँ पर बताया. Is that fine? बोलो. yes, so Okay, so आगे, a resonance effect is electron donating when resonance structures impart a negative charge on carbon of the benzene nucleus. true. True. Because यहाँ पर when you have the Papat group, why we call it as orthopara directing? Because the negative charge appears on the ortho and para, है ना? And a resonance effect is electron withdrawing when resonance structure impart a positive charge on the carbon of the benzene nucleus. True. It is of course true because if I have NSCI का कोई भी group,
NaCl का क्या करता है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। Yes. उसकी वजह से जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो मेटा पे डायरेक्ट हो जाता है। दैट इज वाई वी से मेटा डायरेक्टिंग। तो ये भी करेक्ट है, मतलब आंसर वर ऑल ABCD करेक्ट। ठीक है। Next is a PYQ from 2021. There's a reaction sequence that would, the reaction sequence that would lead to O-xylene as the major product is R. कौन कौन से में O-xylene बनेगा, that we have to understand. First option, we start with the ortho-methyl aniline. What is the first reaction? BDC1. BC. NH2 will change to N2Cl. Then Then it will become Cyanide. cyanide. then Aldehyde. aldehyde. No, aldehyde. that's Dibal H converting a cyanide into aldehyde. Then Then CH3. which reaction is that? Wolff-Kishner. Wolff-Kishner reduction. So that will change the aldehyde into methyl, giving you orthoxylene. Simple charge step reaction sequence. Sorry. Now I have a methyl and a bromo. First step. Or MgBr. Grignard. Grignard हो जाएगा. Then Carboxylic Carboxylic acid. so this will change to MgBr. CO2 will change it to carboxylic acid. Then Rosenmund. superb Rosenmund's. Then Aldehyde. and finally CH3. Clemenson. Clemenson. so ये भी orthoxylene दे रहा है. अब थर्ड में I have a methyl and a styrene group. को डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा होगा बट ये डबल बॉन्ड है. Sorry. Okay, what's the first reaction here? HBO. HBO. And that converts an 1 alkene degree into a Primary alcohol. Primary alcohol. so this will change into CH2. Achha, whether it will change to CH2OH or CH2CH2OH. CH2OH. Not an extra one. Only CH2OH? No, one more. Like one. 1 CH2, There are two CH2. carbons, huh? It will change to CH2CH2OH. CH2. Then PBr3 will convert to BR will come then. Br and zinc dilute HCl. al Alkane. Ethyl will come. Yeah, so it will be ethyl group which I'll get, not the xylene. So C will be incorrect. D. तो बेंजीन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइक्लोपेंटीन है. फर्स्ट स्टेप Ozonolysis. Reactive ozonolysis. तो डबल बॉन्ड तोड़, ऑक्सीजन जोड़. अब बेंजीन के ऊपर I'll get an aldehyde ऊपर and a CH2CHO नीचे. Then Then it will become So what's this CH3 now? and then ऊपर CH3. CH3 हो जाएगा और नीचे इथाइल आ CH3. जाएगा. मतलब ये भी नहीं है. So answer was A and B. ये सिंपल क्वेश्चन था based on the sequence of the reactions from your organic. So in the fourth example, both the top one and bottom one will change. Yes, both are aldehydes. हाँ. Yes, आपको yes. जब नंबर ऑफ मोल्स 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट ब्रैकेट में नहीं दिया जाता है तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज कंसिडर इन, So then you assume that all are getting या instrument. यू कंसिडर दैट इन एक्सेस अनलेस दे स्पेसिफाई कि यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट है तो ही आपको वो लिमिटेड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अदरवाइज नो. So because when I was solving 2, 3 questions in organic also, only one of them changed, but they hadn't mentioned any equivalent out there.
ऐसा तो नहीं होना चाहिए. So because yeah, even I was confused because only there were two chains, but like only one was changing. Not in this type, but another type of question. मुझे भेजो ना वैसा कुछ. कहीं तो कुछ Yes, मेंशन I'll होगा find या us. इनडायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई समथिंग. सेंड इट टू Yes, मी. I'll find it and send. या. ओके. नेक्स्ट 2020 का PYQ from hydrocarbons. There is a compound R which is an optically active compound obtained from P with a formula C9H12 and the sequence of NNH2, acetophenone and hydration. And the same compound P with platinum H2 is giving you N-propyl benzene. P with X reagent and KMnO4H2SO4 on heating is giving you Q, which is an optically active acid. So we are supposed to choose the correct option. It's multiple choice. How do you go about this? Find the DU The first. degree of unsaturation. सबसे पहले DU से ही शुरू करना पड़ेगा. So DU was calculated as twice the number of carbon plus 2 minus hydrogen divided by 2. 4. So DU is 4. ऑप्शंस में देखो तो जनरली मैंने बोला था 4 DU का मतलब इट करस्पॉन्ड्स टू अ Benzene. benzene. But here it is not a benzene. It is a triple bond and double bond and a ring combination, which is given in option A or C. इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो P compound है that is a triple bond, double bond and a ring compound. अब Yeah. what is difference between A and C? Or like the distance, Position of numbering like in the name. So for the P, this carbon and the double bond carbon are alternate. Yeah. और ऑप्शन सी वाले में they are adjacent. Adjacent. है same compound, they are exactly the similar structures but position isomers है वो. Yes. ठीक है. सो आप P कंपाउंड को बाय डिफॉल्ट A वाला कंपाउंड लेकर एनालाइज करो. देन इफ इट इज गेटिंग वेरीफाइड देन दैट विल बी द करेक्ट आंसर. अदरवाइज C को लेके करना है. या भी दोनों भी नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है. ठीक है. So if I consider the option A, then there is a cyclohexane with a triple bond carbon. So this is your CH2, and then there is C triple bond C पे H, and there is a double bond internal to the ring. Now let's apply the sequence which is given. What will NaNH2 do? So we'll take the H plus and Add. make it a minus. Because terminal alkynes are acidic, and NaNH2 acts as a strong base, so it will change it to the acetylate salt C minus Na plus and the benzene. Sorry, not the benzene, sorry, the cyclohexane. Now, next is they have given C6H5COCH3, which is acetophenone. What reaction you will think? So the electrophilic carbon will go to the minus one. Which electrophilic carbon? The like the one with the double bond over that one. And which mechanism have you thought? So ESR. Nah, So cross that the double more bond carbonyl substitution. carbon. Mechanism पूछ रहा हूँ ना. Aldehyde ketones undergo what type of reactions? अरे Addition. aldehyde. Electro. हाँ, via which mechanism? That aside oxygen NA bond. or NOR. अरे नार mechanism बाबा. क्या इतना NOR. time? Listen to the concept. जो हमने aldehyde ketones में पढ़ा. Let's say I have a carbonyl compound, whether it is aldehyde or a ketone. The first thing is the carbonyl carbon is polar because of difference in electronegativity. And because oxygen is more electronegative, the carbon is highly deficient. So it can be easily attacked by a nucleophile. So nucleophile attacks the carbon, pi electron shifts via electromagnetic effect. And now it gives you an intermediate of an alkoxide. याद आया क्या बोल रहा हूँ? And then
प्रोटोनेशन होकर यू गेट अ कंपाउंड विच इज OH NU, साइनोहाइड्रिन वाला रिएक्शन, समझा? ठीक है, तो जब कभी भी अल्डिहाइड कीटोन्स आए उसका सबसे कॉमन रिएक्शन है नार मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. So here, this entire C negative of the triple bonded carbon will act as a source of, न्यूक्लियोफाइल. ये पूरा आपका NU नेगेटिव है, समझता है? And now this nucleophile attacks the delta plus of the carbonyl oxygen. तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और pi इलेक्ट्रॉन स्विच करेगा. अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा that will be cyclohexene CH2C triple bond C attacked on the carbon, जिसके ऊपर I have a methyl, a phenyl, and the double bond O will change to O negative. ONA. So ONA will become or just ONA? Yes, ONA. समझा? Yes. अब आगे हाइड्रोलिसिस दिया है, सो ONA OH. will change to OH. I'll make it OH. And then heat भी दिया है. What will heat do? E1. Heat is E1 acid catalyzed dehydration of alcohol. Yes. फाइनली यहाँ से आपका OH निकल जाएगा और यहाँ से H. You get a double bond carbon. समझा ये प्रोडक्ट फाइनली? Yes. So Okay, so this is your R compound. Now R compound is supposed to be optically active. there's Is that no correct? Sure, there is no chiral carbon. सर CH2 के नीचे वाला कार्बन. हाँ. This carbon Oh, yeah, is chiral. This is your. Acha, is this a geometrical center? No, No, sir. sir. It has No, H2. sir. Does not, Same because oxygen. ये टर्मिनल अल्कीन है और टर्मिनल अल्कीन कभी भी GI शो नहीं करता है. लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड will be a No, GC. sir. No, sir. क्यों? So it will now. So ये it will be, sequence. right? But बोला रही है. सर रिंग के अंदर तो डबल बॉन्ड विल नॉट बी एग्जिस्ट ना. अभी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फंडा वैसे नहीं आता है, बिकॉज रिंग स्ट्रेन का फंडा आ जाता है. बट अगर हम थियोरेटिकल लेवल पे बात करें तो ये वाला GC होगा, बिकॉज इसके बाजू वाले एटम्स अलग है. ठीक है, सो वी आर नॉट सपोज टू कंसिडर, बिकॉज इसके रिंग स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट की वजह से ये GI एक्चुअली शो नहीं करता है. तो दैट इज द करेक्ट थिंग. बट जस्ट अगर मैं थियोरेटिकली पूछूं तो ये जैसे हम काइरलिटी चेक करते हैं वैसे GC भी चेक कर सकते हैं ऑन अ थियोरेटिकल लेवल. ठीक है, बट ऑप्टिकली एक्टिव है वो क्लियर है. यस सर. ठीक है, Yes. सो ये आपका कंपाउंड R आ गया. नाउ एक तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, इज द R कंपाउंड एज गिवन. लेट्स वेरीफाई. तो मेरा यहाँ पर ये Yes. कार्बन है, इसके ऊपर CH2 है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, then there is carbon with a double bond CH2 and then there is a phenyl. मैच हो रहा है? Yes. So ठीक है, बट अभी भी हमने वेरीफाई नहीं किया है कि मेरा A और C में से P वाला कंपाउंड करेक्ट कौन सा है. ये तो मैंने अज्यूम किया है कि मेरा ये P कंपाउंड है, तो मुझे और एक both can चीज be चेक right. करना पड़ेगा. हाँ, Both can be right. कैन बी राइट. अब वो तो करेक्ट है कि सेकंड नहीं, वाला सर. हाँ, सेकेंड वाले सीक्वेंस को मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा. अगर ये एक ही सीक्वेंस दिया होता ना, देन द ACD बोथ वुड बी, ऑल द थ्री वुड बी करेक्ट. ठीक है, तो अभी तक मेरा फाइनल आंसर आया नहीं है. तो अब अगर मैं P कंपाउंड लू तो देर इज अ X रीएजेंट
and then KMnO4H2SO4 heat is giving you Q, which is an optically active acid with C8H12O6. अब X reagent क्या है वो ऑप्शन से ही पता चलेगा because there's nothing mentioned. Considering the X to be palladium carbon quinoline H2. What is this? Well, alkyne to Lindner. alkene. Will convert the kyne into a Keen. kene. ठीक है, so color change. If I consider that, then through the X and the KMnO4, I'll get CH2, CH double bond, CH2, and the double bond internal to the ring. बराबर? अब KMnO4 H2SO4 heat कौन सा रिएक्शन है? Oxidative. Oxidative ozonolysis. हाँ, similar to oxidative ozonolysis, but एक The change आता है formic उसमें. acid gets converted to Formic H2. acid get converted to CO2 plus H2. Correct. So let's apply that. ये मेरा डबल बॉन्ड तोड़, ऑक्सीजन जोड़, ये मेरा फॉर्मिक एसिड बनेगा. तो अल्टीमेटली CO2 and H2O, वो तो वैसे भी प्रोडक्ट निकल जाएगा. This carbon will change to an aldehyde, which will change to acid. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड तोड़, ऑक्सीजन जोड़, aldehyde एसिड बन जाएगा. Let me write the acid. यहाँ से शुरू करूँ from this carbon, then it will be HOOC, CH2. Then this is your CH वाला carbon. लेफ्ट साइड से जाए तो आई हैव CH2 COOH एंड राइट हैंड साइड वाला 1 CH2 and COH. इसी CH पे CH2 and COH. Is a way of writing the acid clear? Yes, so. So what अब reaction did you think for KMnO4? इट्स ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के जैसा. डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो. इफ अल्डिहाइड है तो एसिड बनाओ, कीटोन है तो वैसे ही रखो. एंड देयर वाज वन मोर पॉइंट व्हिच आई हैव एडेड, दैट फॉर्मिक एसिड होगा तो CO2 and H2O. So after breaking this double bond and joining the oxygen, this carbon changed to acid. Even these two carbons changed to acid. So what समझा? was the reaction where you took KMnO4 as an oxidizing agent for the chain, but that was only for benzene, right? Like when you have a benzene compound and you put KMnO4, like whatever was That is for the alkyl substituted on the ring. वो टोलू into benzoic acid सोच रहा है तो. yeah, so अच्छा there's a double bond also. वहां पे बेंजीन अफेक्ट नहीं होता है, वहां पे बेंजाइलिक कार्बन gets oxidized into the carboxyl group. Yes, This is across the double bond ozonolysis जैसा reaction. so but what's the difference? Because in both there was KMnO4 only, right? So this one Yeah, will KMnO4 is an oxidizing agent, but when it is used for aromatic compound, it will oxidize the alkyl attached to the benzene and not affect the benzene because of its stability. But this is an alkene. yeah, it's not a benzene. That's not a benzene, of course. Okay, Yes. समझा? So let's see how many carbons I am getting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and 3 carboxyl group मतलब O2 वाला structure into 3. मतलब O6 भी verify हो रहा है. And is this optically active? Yes. No, No, sir. no. Symmetric. That's the They are the problem. same groups. You are getting two groups which are same. So this is not chiral, achiral है ये. मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने पी का अज्यूम किया है उसमें गड़बड़ है. अब अगर जस्ट मैं इस डबल बॉन्ड को यहां चेंज कर लूं तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें खाली डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आएगा. जस्ट अ सेकेंड. या हेलो. Yes, sir. Yes, so. ओके, सो अब क्लियर है कि ए वाला कंपाउंड इज नॉट द करेक्ट वन. अब सी वाले में व्हाट डिफरेंस वी हैव इज
we have this double bond on this particular carbon, right? Yes, sir. ठीक है, so double नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, CH2 on the this carbon, sorry, correct? मेरा Yes, ये sir. डबल बॉन्ड तो P to R के सीक्वेंस में वैसे भी चेंज नहीं हो रहा था, तो I'll just change it over here. ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर लूं ऑन दिस, तो अब जब डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो करेंगे, तो लेट्स सी व्हाट डिफरेंस वी गेट. ठीक है, सो आई विल नाउ गेट HOOC CH2 CH पे. Now this is CH2 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 and COH. CH2 thrice with a COH, and ये वाले CH पे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है. अब सेम फॉर्मूला का एसिड आ रहा है, बट नाउ दिस इज ऑप्टिकली है कि नहीं? अब ये ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है, मतलब मेरा जो कंपाउंड है दैट इज नॉट पी, बट इट इज, सॉरी, मेरा जो कंपाउंड पी है दैट्स नॉट ऑप्शन ए, बट दैट इज ऑप्शन सी. C. एक्स वाला रिएजेंट बी करेक्ट है, और आर वाला कंपाउंड वाज गेटिंग वेरीफाइड विद द ए वाला कंपाउंड. ऑफ कोर्स ए अगर रूल्ड आउट है तो आर बी, Ruled out. ऑप्शन डी भी रूल्ड आउट है. तो इसका करेक्ट आंसर था बी एंड डी. समझा? इसमें खाली पेशेंटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि ये कंपाउंड से आपको आर मिल गया तो करेक्ट है, क्योंकि दूसरा सीक्वेंस अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, देन यू विल मेस अप इन द ऑप्शंस. एक्चुअली सेलेक्ट ए एंड डी एज द options which are actually wrong. Got it? Clear? यस सर. Okay. Numerical value, integer answer. There are X geometrical isomers of 1 and Y geometrical isomers of 2. The sum of X and Y is. फर्स्ट स्ट्रक्चर वैसे दिखता है कॉम्प्लिकेटेड, बट इसके कितने आइसोमर्स आएंगे वो डायरेक्टली फाइंड करने का एक सिंपल ट्रिक है. सबसे पहला चीज, दिस डबल बॉन्ड कार्बन इज हैविंग अ मिथाइल एंड अ H, मिथाइल एंड अ H, methyl and a H, methyl and a H. All the groups on the four carbons of cyclobutane are exactly the same. So how many different arrangements I can have with respect to this And particular what GI structure? will happen in the first one? Won't GI? GI won't happen in the first one. होगा. कैसे होगा? इस डबल बॉन्ड कार्बन पे H and methyl are they different? Yeah. And इस डबल बॉन्ड कार्बन पे वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये सब ग्रुप सेम है, लेकिन इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड कार्बन का जो अरेंजमेंट है, अगर यहाँ पे सिस है तो ऑन द ऑपोजिट साइड आई कैन हैव अ ट्रांस. ट्रांस व्हिच कैन बी डिफरेंट, राइट? Yes, sir. समझा? तो ये वाला एक स्ट्रक्चर है जो काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है. मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू द साइक्लोब्यूटेन, लेट्स से इस डबल बॉन्ड कार्बन पे आई हैव अ H मिथाइल, एंड नीचे भी आई हैव H एंड मिथाइल. Now, what you have to compare is these two methyls are on the same side. अरे हाँ कि नहीं? और ये वाले दो methyls को भी कंपेयर करना है. They are also on the same side. So I can say that this particular is a cis-cis type of arrangement. ये एक अरेंजमेंट हो गया. अब
दूसरा अरेंजमेंट कैन बी ट्रांस ट्रांस टाइप, मतलब फॉर दिस डबल बॉन्ड, फॉर दिस साइक्लोब्यूटेन, अगर मेरे पास यहाँ पर H मिथाइल है और इस डबल बॉन्ड कार्बन पे मिथाइल H कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ट्रांस, और ये H मिथाइल के साथ ऑन द अदर साइड आई कैन टेक मिथाइल H विच इज अगेन नाउ ट्रांस। तो ये ट्रांस ट्रांस टाइप अरेंजमेंट हो गया। एंड नाउ आई कैन हैव अ कॉम्बिनेशन which is एक तरफ let's say H methyl are on the same side and on the other side I have H with methyl on the opposite side। तो ये हो गया मेरा सिस ट्रांस और ट्रांसिस, बिकॉज आइदर वेज मैं ये ग्रुप को टर्न करूं मुझे सिस ट्रांस और ट्रांसिस सेम ही मिलने वाला है। So these are the only three arrangements for this particular structure which is given, and we can say there are three geometric isomers which are possible। समझा? Yes, sir. तो ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी आए तो आपको इसी तरह से वर्कआउट करके आंसर करना है। सो द एक्स ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू 3। नाउ फॉर द सेकंड स्ट्रक्चर, हाउ मेनी stereo centers first of all do you see 3 and what are they? फिर एक तो बीच वाला एंड देन 2 रिंग्स। एक बीच वाला और 2 रिंग्स। अब उनमें भी देयर कैन बी द कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ज्योमेट्रिक। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर्स को आपको देखना ही नहीं है बिकॉज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस इज ओनली द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, राइट? यस। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर भी है लेकिन वो आपको कंसिडर नहीं करना है। अब let's say I have this cyclobutane which is bonded with a double bond carbon and I'm just showing in the form of a planar arrangement जो अपना अल्कीन का रहता है। So H on the same side, ये मेरा cis हो गया। अब ये जो क्लोरो है on the ring, even that can have the GI possible, where if I have one of the chloro on the dark wedge and दूसरे side भी the chloro is on the dark wedge, what combination can you tell me? cis cis हो गया। Yeah. वैसे ही it can have Trans, and trans trans, and will the cis trans and trans cis for this different? No. एक बार बना के देखते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड कार्बन के 2 हाइड्रोजन को सिस रखता हूं एंड ये 2 साइक्लोब्यूटेन है, ट्रांस करने के लिए ये मेरा अगर डार्क वेज पे है तो ये डैश पे चला जाएगा। दिस कॉम्बिनेशन आई कैन कॉल इट एज सिस एंड ट्रांस। Yes, sir. फॉर ट्रांस सिस द डबल बॉन्ड कार्बन का 2 हाइड्रोजन मस्ट बी ऑन द ऑपोजिट। ये मेरा ट्रांस हो गया फॉर दिस डबल बॉन्ड एंड इसका सिस विल हैव, अगर यहाँ पे डार्क वेज लिया तो इस केस में भी ये डार्क होना चाहिए, तब जाके ये मेरा ट्रांस सिस हो जाएगा। अब आर दिस टू स्ट्रक्चर्स सेम? Look at the geometrical arrangement. No, it's not. It's not the same. It's not the same. That is why यहाँ पर cis cis trans cis trans and trans trans. Basically, you will have 2 geometric centers जिसके total number of isomers will be simply 2 raised to the power 2, which is 4. मतलब the y का value will be equal to 4. The middle one you don't count, like Which the one? double bond, about the double bond. About the
About the double bond, like when you do 2 raised to 2 like that, you don't like count it as 2 raised to 3. No, no, no. Because what we are comparing is this particular chlorine का arrangement with this particular chlorine. क्योंकि मेरा rings जो है, actually there is a symmetry also ना. तो अगर आप formula wise करोगे ना, तो you will end up getting an answer which may or may not be correct. That is why ये draw करके मैंने आपको बताया, so that the confusion is not there. समझा? यहाँ पर देखो आप, क्लियर है, पहले सिमेट्री दिख रहा है, Yeah. आके नहीं, इसमें ज्योमेट्रिक सेंटर्स के हिसाब से सिमेट्री है। ठीक है, 3 ज्योमेट्रिक सेंटर्स है एक्चुअली। दिस इज आल्सो GI, GC, आई कैन से। So but for 3 it was like with symmetry it was 6 now, like for one case. हाँ, अब उसमें भी नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स GC मिडल में है या OC यानी ऑप्टिकल सेंटर मिडल में है, उसके लिए फॉर्मूला अलग अलग था। हाँ. तो वो फॉर्मूलाज जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अप्लाई, ड्रॉ करके देखोगे तो हमेशा बेटर है। So drawing is better than directly applying the formula. And so in the second structure, the fourth one is trans, like both light wedged on the same side. हाँ, मतलब ये मैं अगर इसको एक डार्क और एक डैश रखूं तो ट्रांस हाँ. ट्रांस हो जाएगा। जो मैंने हाँ. ये बनाया है ना, दिस इज डार्क एंड दिस इज डार्क, both on the Hmm. dark will be cis and one Yeah. dark one dash will be trans, so that will become trans which I have not drawn. 3 I have drawn, the fourth one will be the trans combination. So it's trans because of like the hydrogens opposite and cis like with respect to the wedges. Yeah. Because when you are drawing the groups on the cyclic ring, na, cis and trans can only be shown with respect to the wedge. But when you have the double bond, with respect to the groups, you can show the groups on the same side or on the opposite side. So the way of showing the geometric isomerism in alkene is this. H is on the same side or opposite. But जब आप ring पे करते हो तो wedge के साथ ही काम कर पाओगे. You can draw it with respect to the substituents on the same side or opposite side. Got it? Yes. Okay. नेक्स्ट, इस टाइप के भी PYQ एडवांस में और मेंस में आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देते हैं। सो द क्वेश्चन इज टेक्सोल A given below is an anti-cancer agent active against ovarian, breast, and some lung tumors. Number of stereogenic centers in A. So don't worry about the first data. What is the question? You have to find the number of stereogenic centers. And when they say stereogenic centers, matlab you have to consider Both Y one. and GI. OI and GI. OI and GI दोनों consider करना है. So इस type के complicated structure just proceed from left to right. So from left, benzene में तो कुछ नहीं है. Which is the first optical center? That NH one. के बाजू में ये वाला carbon, which is chiral. अच्छा, is N considered to be chiral? No. Even nitrogen can show the optical activity, because when you have the nitrogen, which is a pyramidal shape, having 3 valencies and a lone pair, and if these 3 valencies are all different, then even this particular center will be chiral. Instead of chiral carbon, we will call it to be chiral nitrogen. So here will be chiral, no? It will be chiral. So you have to count that as a chiral stereogenic center. वापस बता रहा हूं, जैसे कार्बन की चारों वैलेंसी अलग होती है, वैसे नाइट्रोजन में भी इफ द 3 वैलेंसीज अलोंग विद द लोन पेयर तो हमेशा यूनिक ही है, तो बाकी 3 वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो उसको भी आप कायरल कंसिडर करोगे। ठीक है, सो यू आर सपोज टू कंसिडर द कायरलिटी ऑफ द नाइट्रोजन ऑल्सो,
आइसोमर्स एंड एवरीथिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है, बट कायरलिटी अगर आया तो यू हैव टू कंसिडर। ओके, अब उसके बाद इज दिस OH वाला कार्बन कायरल? Yeah. यस। सी डबल बॉन्ड हो? नो। No. ऑक्सीजन? नेवर, क्योंकि दो लोन पेयर हमेशा क्लैश होंगे। ऑन दिस रिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो काउंट नहीं करना है। ये वाला कार्बन पे दो मिथाइल है तो नहीं। ये तो CH2 है तो रूल्ड आउट। ये वाला कार्बन? Yeah. यस। और कोई? The one connected to oxygen. Yeah. That. यस। सो रिंग बाय रिंग आप देखो कि इस रिंग में कितने कायरल सेंटर्स हैं, तो ये रिंग में दो। अब ये वाला जो बड़ा आउटर रिंग है उसमें इज दिस कार्बन कायरल? Yes. So. Yes. यस। डबल बॉन्ड तो देखना No. नहीं है, ये वाला? Yeah. यस। ये वाला? Yeah. यस। Yeah. ये वाला No. CH2 है तो नो। अब कमिंग टू दिस रिंग, दिस कार्बन Yeah. इज कायरल? CH2 No. नो। दिस Yeah. कार्बन? यस। I. Sure. हाँ So in the previous ring, is that connected to oxygen below? हाँ हाँ, बाय द डार्क वेज। So it is chiral. तो हाँ CH हो जाएगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी है, राइट। ये वाला रिंग में एडजेसेंट टू दिस, Yeah. इस रिंग में इतने हैं। बाकी ये C डबल बॉन्ड O वाला स्ट्रक्चर्स इट विल नॉट बी कायरल। यहाँ पे वो वेजेस थोड़ा मिसिंग है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। हाँ, ये आपका एस्टर ग्रुप है विच इज कनेक्टेड ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कायरल। ओके, रेस्ट ये तीनों बेंजीन रिंग्स है तो इनको तो आपको रूल आउट ही कर देना है। नाउ लेट्स काउंट इट, 1 2 3 इन दिस रिंग, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। द करेक्ट आंसर इज स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है 12। So don't we have to consider geometrical isomerism also? कहाँ पर है ज्योमेट्रिकल? GC है ही नहीं एक भी। Oh yeah. So in the benzene ring it won't be. So but the हाँ ना, CC bond in the third ring, which is not a benzene. इन दिस रिंग। Yeah. हम्म। So the upper wala is CC bond now, and the substituents are also different. हाँ, लेकिन जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि डबल बॉन्ड में थियोरेटिकली वो GI शो करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली रिंग के अंदर स्ट्रेन होने की वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है फॉर So द but साइक्लोहेक्सेन। so for cyclohexene there's never GI. नो, बिकॉज ऑफ द रिंग स्ट्रेन, बियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है उधर, Acha, okay. आपको नहीं कंसिडर करना। वो तो थियोरेटिकली मैंने ऐसे ही बताया कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर सिमेट्री वाला चीज चेक करना है तो कैसे करते हैं, राइट। I'll take up one more question and then we'll wind up. इसमें भी वेजेस कहीं कहीं पे मिसिंग है, लेट मी ड्रॉ इट। दिस इज डैश, दिस इज डैश डैश डैश, रेस्ट। यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश, एंड हाँ इवन हियर। ओके, should be fine now. So how many of the following will rotate plane polarized light? Basically what you are supposed to find, Optically active. Optically active. the first one, 1,3 diol, cyclohexane 1,3 diol. Yes. Symmetry. No. है कि नहीं? It's optically enough. Oh yeah. बस है ना? नहीं है। सेकंड, Yeah, because there's Yeah. no symmetry. तो फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस यही है दैट हियर द OH इज अबव द प्लेन एंड दूसरा OH इज बिलो द प्लेन।
दिस इज सिमिलर टू द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट जो मैंने जस्ट प्रीवियस बताया था, Yes. समझा? The actual cyclohexane is in the chair conformation with one bond which is above the plane axial and other inclined at an angle of 109.5 degree. This is definitely optically active and will rotate the PPL. What about third? No. Symmetry. Complete symmetry. So no. Fourth, No. maybe symmetry है. Para position वाला structure will never show the OI. Correct. फिर fifth, symmetry. Sixth, Symmetry. maybe symmetry है. Seventh, Symmetry. Symmetry. that's a clear meso compound now, optically inactive. But eighth one, Symmetry. Symmetry. huh? Oh, sorry, it's ulta. So, but it's अरे बाबा, this is the tossing of two similar coins ना. तो अब अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन RS है तो दूसरे वाले का SR, SR, yeah. and SR. those two are optically active. So इसके चार स्ट्रक्चर्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, बट थर्ड एंड फोर्थ आर इनएंशियोमर्स ना. तो इसको आप ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर करोगे, हाँ कि नहीं? Yes. दिस इज द फेमस एग्जांपल ऑफ टार्टरिक एसिड. यही मैंने एग्जांपल लिया भी था टू एक्सप्लेन यू द टू काइरल सेंटर विद सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट. यू रिमेम्बर? Yes. फिर टेंथ वाला Symmetrical. सिमेट्रिकल रूल्ड आउट. 11th, Chiral. Yeah. इट इज अ काइरल सेंटर, ये है. एंड 12th ये भी है. symmetric. है सिमेट्रिकल. But it's opposite, no? Like, So So the H का the wedge is different. दोनों और डार्क और wedge डैश, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेस्ट वे दिमाग मत लगाओ. RS. RS. अगर मेरा sure. कॉन्फ़िगरेशन RS आया तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, RR या SS आया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. याद है ये? तो what I'll do is this is given like this. I have a methyl. मैंने इसको ऐसे रोटेट किया. लेट मी शो इट टू यू. ये वाला ऐसे कर दिया, चलेगा ना? Yes. So, ठीक है, तो ये वाले कार्बन के ऊपर मेरे पास डैश Cl है, डार्क H है. ये वाले पे डैश Cl है, डार्क H है, एंड मिथाइल है. अब क्विकली इसको फिशर में कन्वर्ट करते हैं. तो ऊपर मिथाइल, एंगल ऑन द राइट, solid wedge on the right with HCl, then angle on the left, solid wedge on the left. Now this is clear. क्या है? optically active. ये ऑप्टिकली एक्टिव है. तो इसीलिए मैंने वो बोला हुआ है कि दिमाग मत लगाओ, RS लगाओ. अब RS ना भी लगाओ तो इस केस में आपको पता है कि अगर वो इरिथ्रो टाइप है, मतलब H और Cl आर ऑन द सेम साइड, तो ही वो मीजो कंपाउंड बनेगा. अदरवाइज वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. इज दैट वेरी क्लियर? Yes. Yes. So, This not having a pause. So this will be optically active. Hence the total optically active which will rotate the PPL are 4. Good question to understand. अच्छा, just with respect to the second structure, एक और चीज बता देता हूं. If I had the 2OH as this, would it be rotating the PPL? yes. 1,2. Yes, ये रोटेट करता. बट अगर दोनों OH मेरा ऐसा डार्क वेज पे होता, एन So pause comes, no? यस, ये सिमेट्री हो जाता. मतलब बेसिकली 1,2 एंड 1,3
3 में जो ट्रांस वाला आइसोमर है वो ही OI शो करेगा. Is this statement clear? Yes, sir. If I 1,2 and 1,3 का सिस मतलब दोनों डार्क पे हो या दोनों डैश पे हो तो वो OI शो नहीं करेगा. ये सिंपल ट्रिक आप लिख सकते हो एंड यू कैन रिमेम्बर इट. Only the trans isomer will show the OI. Got it? Yes. Okay, so we'll wind up for today. There are a few more questions which I will continue in the next session. Along with that, I'll continue with the Organica halogen derivatives chapter, haloalkenes, haloarenes. And then it will be a kind of mixed MCQ only, where you have to know the aldehyde ketones and amines chapter to actually solve the PYQ or any of the question from organic. आपने आज भी देखा कि वॉल्फ किश्नर आया, अल्काइलेशन, असाइलेशन, so it was a mix of the organic chemistry questions. So जब तक वो 4 चैप्टर आपके एक साथ पक्के नहीं होते हैं तब तक आप PYQs या फिर अपने MCQs नहीं कर पाओगे. Fine with it? Yes, sir. चलो, so next Monday we'll continue with the organic only, but a mix of the questions not specific to haloalkanes but all the 4 chapters together. एक पूरा सीरीज लेंगे जो पूरा ऑर्गेनिक कवर करेगा अपना. ओके. Bye.